Hello friends, before moving on to the hands-on practical session, we will try to understand what is the FastAPI and why should we go for the FastAPI. As the name indicates, FastAPI यानी कि आपको अगर कोई भी एप्लीकेशन बनानी है, कोई मोबाइल ऐप बनाना है या कोई AI ML एप्लीकेशंस डेवलप करना है, then the FastAPI is required for that. अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि फास्ट एपीआई की ज़रूरत क्यों पड़ी, जब पहले से ही हमारे पास में अदर फ्रेमवर्क्स मौजूद हैं लाइक जेंगो एंड नोड.js बैकएंड के लिए ऑलरेडी मौजूद हैं. देन व्हाई वी शुड गो फॉर द फास्ट एपीआई. एज द नेम इज इंडिकेटिंग द फास्ट एपीआई, यानी अगर हमें कोई फास्ट एप्लीकेशंस डेवलप करनी है या हमें कोई लाइट वेट एप्लीकेशन डेवलप करनी है, देन वी नीड टू यूज द फास्ट एपीआई. Fast API is used to build the fast and modern backend APIs using Python. ये जो Fast API है आपका Python का लेटेस्ट फ्रेमवर्क है, मॉडर्न Python फ्रेमवर्क है that is used to build the APIs and these API are used for building the websites, mobile applications and AI/ML applications. अगर आप Django यूज करते हैं Fast API की जगह, then Django is little heavier compared to the Fast API. सो यहाँ देख सकते हैं हम कि वाई डू वी नीड फास्ट एपीआई. सो फास्ट एपीआई को यूज करने की क्या वजह है कि हम जेंगो फ्रेमवर्क्स की बजाय जो हम फास्ट एपीआई यूज कर रहे हैं. इसका मेन कारण है रेस्पॉन्स. एज यू कैन सी हियर, द रेस्पॉन्स ऑफ फास्ट एपीआई इज वेरी फास्ट एंड दीज ऑल्सो प्रोवाइड दिस सिक्योर एपीआईज. फास्ट एपीआई की हेल्प से हम जो सिक्योर एपीआईज बना सकते हैं एंड वी कैन ऑल्सो make it scalable. Whatever applications backend applications we develop, basically we can make it scalable and उस backend को हम आराम से जो है easily deploy कर सकते हैं over the cloud और over any other platforms. इसकी एक खास बात और है फास्ट एपीआई की, it support the async, यानी कि it can handle many requests efficiently. अगर हमारे पास में multiple users हैं, then it can easily support the multiple users. अगर हमारे पास में मान लीजिए वी मेक आवर एप्लीकेशन स्केलेबल एंड नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज, और नंबर ऑफ यूजर्स हमारे इंक्रीज होते हैं, ट्रैफिक हमारा बढ़ जाता है किसी वेबसाइट पर. सो दिस ऑल्सो सपोर्ट दिस काइंड ऑफ फीचर विच इज़ वेरी यूजफुल फॉर स्केलिंग आवर एप्लीकेशन और इफ द नंबर ऑफ यूजर्स इंक्रीज और द ट्रैफिक इंक्रीज. The fast API auto generates document with the help of Swagger. This provides the Swagger UI. Next है आपका automatic API documentation. You need not to generate the documentation for the code, whatever code you will be developing. For that code, the documentation will be developed automatically, or documentation will be generated automatically with the help of Swagger UI. So this is the very interesting and interactive API basically. And आपको अगर अपने कोड को टेस्ट करना है, then you simultaneously you can test your code also with the help of the Swagger UI, जो कि आपके डॉक्यूमेंटेशन है वहाँ पर आपको जो है अगर कोई भी आपको कोड बनाते हैं, then you simultaneously you can test it and you need not to generate the documentation by yourself. It will automatically develop it for you. And next आपका no extra setup is needed to build such kind of APIs. Easy to learn है आपका, beginner friendly है, and anyone who does not have any exposure can start working with the fast API, and it supports very simple syntax and very less code is required to the fast APIs, and also it gives the Python hints when you will start working on the fast API. The Python hints will be provided to you, so you can easily develop the fast API without any complexity, without any problem. And next है आपका built in validation, यानी कि आपका जो fast API है it also uses Pydantic which is used to validate the data. आपका डेटा का स्ट्रक्चर किस टाइप से होना चाहिए, आपका जब भी आप कोई भी मान लीजिए एप्लीकेशन बनाते हैं तो you will need to have the knowledge of the data structure, what kind of data structure you will be using. So it is you with the help of the Pydantic, it validate the data कि डेटा का स्ट्रक्चर क्या है या किस तरह के डेटा को सपोर्ट करता है, एंड सो दैट इट ऑल्सो प्रिवेंट्स यू फ्रॉम giving the wrong input, and it also reduces the bugs.
So these are some of the features of FastAPI, and which makes it very interesting and popular for the scalable applications. इसका रियल वर्ल्ड यूज केसेस हम देखें तो हम देख सकते हैं कि इट इज हाईली पॉपुलर इन AI ML सिस्टम्स, फिनटेक एप्लीकेशंस. अगर आपको कोई भी एप्लीकेशन SaaS एप्लीकेशन बनानी है, then you can use the FastAPI for that purpose, and even for the high performance applications also you can use the APIs, FastAPI. This is the final point why you should use the FastAPI. This is very fast, easy to deploy. Auto documentation is provided while you will be working on the code. Basically, the auto documentation will be generated. So this is the modern Python framework, which is very fast and scalable, and you can develop any applications, mobile application or the basically web application, production ready. Okay, now we have understood the FastAPI. Now let's move to the complete roadmap.